अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशन प्लस रिजल्ट्स। इफ यू स्टैंड इन द रेन यू गेट वेट, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। ये जीरो कंडीशनल है। प्रेजेंट सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल में उसका जवाब भी होगा, रिजल्ट भी होगा। यूजेस फैक्ट विच आर जनरली ट्रू आर साइंटिफिक फैक्ट, द कंडीशन ऑलवेज हैज द सेम रिजल्ट। जीरो कंडीशनल में first conditional, if it rains we will cancel the trip, if you study you will pass the exam. Present simple plus will, want plus verb. Use a possible situation in the future, predicting a likely result in the future if the condition happens. Second conditional, if I won the lottery I would travel a lot, if they sold their house they would be rich. Past simple plus would plus verb, ये सेकंड कंडीशनल है। यूजेस हाइपोथेटिकल और अनलाइकली सिचुएशंस, अनरियल और इम्प्रूवेबल सिचुएशन नाउ और इन द फ्यूचर। थर्ड कंडीशनल, इफ यू हैड स्टडीड, इफ आई हैड बीन सिक यू वुड हैव पास द एग्जाम, आई वुड हैव गॉन द योर पार्टी, if I hadn't been sick I would have gone to your party. Past perfect है plus would have plus participle आएगा, past participle. Uses can the person is imagining a different past, imaginary situation that did not happen in the past. तो ये यानी कि जो imaginary situation होती है वो पास्ट में हैपन होती नहीं है, वो फ्यूचर में ही होती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंतहाई अहम होगी। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी और टाइम पर पहुंच सके। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।